Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve 13th problem of cash book from Intermediate First Year Accountancy. Now let us begin with our problem. Prepare triple column cash book from the following transactions. Immediately after reading this, we'll draw the format of triple column cash book, and let us begin with the first transaction. On 1st February 2019, cash, bank. This is what cash and bank, these both are our asset का debit balance रहता. What we have to do, we have to move towards the debit side. Receipt side move हो गया. So what is the date? The date is 1st February 2019, and we'll adjust this a bit. Yes, and in the receipt section we have to write to balance B/D brought down. So what is the balance of cash? That is 9,350. And what is the balance of bank? That is 10,000. Right? Now let us see the next transaction. That is on 4th Feb. Cash sales 2,800. आप sale करे in return of cash. So on 4th Feb 2019, what we have done? We have done sales. ठीक है, तो हमारे बिजनेस में पैसे आए तो रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करना है. So sales account. What is the amount? The amount is 2,800. Then after that, the next transaction is sold furniture and received amount through Google Pay. फर्नीचर बेचे आप 7th के दिन और पैसे आए हमारे पास मगर कैश नहीं आया. वी हैव रिसीव्ड थ्रू गूगल पे. इसका मतलब है हमारे बैंक अकाउंट में आए पैसे. सो विल राइट द डेट 7th. पैसे आए तो रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करना है. 7th of February 2019, and what we have done, we have sale furniture to furniture account. What is the amount? The amount is rupees 6,000 in the bank column because we have received this cash through Google Pay. Right? Now let us move towards the next transaction, that is on 10th. Cash deposited into bank. तो कैश लिया आप, बैंक को गए, डिपॉजिट कर दी. Whenever there is a direct connection between cash box and bank, contra entry exists. तो contra entry होते कि immediately हमको journal entry पास करना है. What is the journal entry of cash deposited into bank? Bank account data to cash account. इसको गौर से देखो. To किसके साथ है? To cash. So here we will write to cash account. In LF column we have to write C, and here we will write by bank as per our journal entry. To cash इधर आना है, by bank इधर आना है journal entry के हिसाब से. by bank. What is the amount? In the LF column we will write C. Let us see the date and the amount of cash deposit. The amount is 4,200 and the date is 10th Feb. So first we will write the date, that is on 10th Feb 2019, and here also we will write the date, that is on 10th Feb 2019, and we will adjust this a little bit. Yes, always remember what is the rule of contra entry. You need to enter the amount in the opposite column. ठीक है, कैश दिखा तो बैंक में एंटर करो, बैंक दिखा तो कैश में एंटर करो. तो इधर क्या है? कैश. सो वी हैव टू एंटर इन बैंक, दैट इज 4,200. इधर क्या दिख रहा? बैंक. सो वी हैव टू एंटर इन कैश. व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट इज 4,200. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज ऑन 14th. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल, प्राइवेट, डोमेस्टिक दिखते कि ये क्या है? ड्रॉइंग्स. ठीक है. ओनर इज टेकिंग कैश फ्रॉम द बैंक अकाउंट. तो हमारे बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं. पैसे गए तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड करना है. हियर वी विल राइट बाय ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स अकाउंट. व्हाट इज द डेट? द डेट इज 14th and the amount is 600. So in the bank column we have to write 600 and the date will be 14th of February 2019. Now let us move towards the next transaction, that is on 17th.
चेक रिसीव्ड फ्रॉम नवीन। मैं क्या बोला, जब कभी भी चेक रिसीव हुआ तो हमको पॉज देना है, पॉज दे के आगे के ट्रांजैक्शन में जाके देखो कि चेक आप 17 के दिन डिपॉजिट करें, नहीं, ये चेक आप कब डिपॉजिट करें, 23 के दिन। तो इसका मतलब 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये 6 दिन तक वो चेक किधर रखा हुआ था, हमारे कैश बॉक्स में। ठीक है, चेक मिला, हम कैश बॉक्स में रख दिए जब का जब आप डिपॉजिट नहीं करें। सो इसका जो अमाउंट है वो इंस्टेड ऑफ बैंक कॉलम वी नीड टू एंटर दैट अमाउंट इन कैश कॉलम। कहीं को चेक डिपॉजिट नहीं करे, चेक किधर रखा हुआ है, कैश बॉक्स में, इसीलिए हम इसका अमाउंट कैश बॉक्स में एंटर कर रहे हैं। राइट, नाउ लेट अस फॉलो अवर प्रोसीजर। ठीक है, 17 के दिन चेक मिला 5800 का। राइट, हु इज द गिवर, नवीन इज द गिवर। सो हमारे बिजनेस में पैसे आए, तो पैसे आए तो हम किधर लिखते, रिसिप्ट साइड। कौन दिए पैसे, ये नवीन। सो टू नवीन्स अकाउंट, टू नवीन्स अकाउंट, and 5800 is the amount, 200 is discount allowed. So in the discount column we need to write 200 and in cash column we need to write 5800। क्यों, ये चेक इमीडिएटली डिपॉजिट नहीं करे, अगर करते थे तो ये 5800 बैंक कॉलम में लिखते थे हम। ठीक है, बट हम चेक डिपॉजिट नहीं करें, वो चेक को कैश बॉक्स में रख दिए, इसीलिए इसका अमाउंट भी हम कैश कॉलम में लिख रहे। राइट, व्हाट इज द डेट, द डेट इज 17th February 2018। now what we'll do, we will adjust this a little bit. Yes, now after that let us see the next transaction. Received cash from Manasa 3700, discount allowed 300, 25th February. So we have received cash from Manasa on 25th, in date we will write 25th of February 2019 to Manasa, apostrophe S, to Manasa's account A/C. How much we have received, we have received 3700 and discount is 300. So 300 is the discount and we have received 3700 cash from Manasa on 25th. Then after that, so Naveen का 23rd के दिन है, we have write 17 here, so the date is 23rd and we have left one transaction, एक transaction हम छोड़ दिए। क्या है वो transaction, that is on 21st, no, we have done a bit mistake here। 17 के दिन नवीन की डेट राइट थी और हम एक ट्रांजैक्शन स्किप करें, दैट इज ऑफ 21। सो अगेन वी नीड टू एडिट दिस, 17 is the right and we have skipped one transaction, that is on 23rd, so 21st, audit charges, charges मतलब payment, so we have to move towards the payment side। we will write here the date, that is 21st February 2019 and in the payment side we have to write by audit charges account। what is the amount of audit charges, the amount of audit charges is 150, the amount of audit charges is 150। now after this on 23rd नवीन्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नवीन के पास से जो चेक मिला था वो 23rd के दिन हम डिपॉजिट करें। ठीक है, सो नवीन का चेक किधर रखा हुआ है, कैश बॉक्स में, कैश बॉक्स ओपन करें हम, चेक लिए, बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिए। सो वेन एवर देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन कैश बॉक्स एंड बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री एग्जिस्ट। तो कॉन्ट्रा एंट्री होती कि इमीडिएटली हम जर्नल एंट्री पास करते। व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ डिपॉजिट, बैंक अकाउंट डेटार टू कैश अकाउंट। सो टू द टू किसके साथ है, टू कैश के साथ है। सो हियर
we will write to cash on 23rd February 2019, and here we will write to cash account, and in the LF column we will write C. अब टू कैश इधर आया तो बाई बैंक क्रेडिट साइड पे आता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जर्नल एंट्री 23rd to 2019. इधर टू कैश लिखे तो आप इधर बाई बैंक लिखना, बाई बैंक एज पर अवर जर्नल एंट्री, बाई बैंक account, and in LF column we will write the date. Now always remember, कॉन्ट्रा एंट्री का रूल क्या है, इधर कैश दिखा तो अमाउंट किधर एंटर करते हैं आप, बैंक कॉलम में. सो व्हाट इज द अमाउंट, कितना था अमाउंट, 5800 था. सो 5800, एंड इधर क्या दिख रहा है आपको, बैंक. तो अमाउंट किधर एंटर करते हैं आप, कैश में, ऑपोजिट कॉलम में अमाउंट एंटर करना है. सो द अमाउंट इज 5800. डन, राइट? यस. नाउ let us move towards the next transaction, that is 25th वाला कर लिया हम, ये skip कर दिए थे. 27th paid to Monica through check in full settlement of her account 1900 पे करे आप, देना कितने था, 2000 देना था. so there is a difference of 100 and that is discount. so paid मतलब we have to record on the payment side. what is the date is 27th. So on the payment side, we'll write 27 to 2019, and here we'll write by Monica's account. What is the amount? मोनिका को कितना पे करें आप चेक के थ्रू, 1900 पे करें, तो डिस्काउंट कितने का मिला हमको, 100, right? and check दिया ना आप, so you have to record in the bank column, that is 1900. now everything is done, now we need to do total. अब पहले हम टोटल किसका कंसिडर करेंगे, डिस्काउंट कॉलम का. लेट अस सी, द डिस्काउंट allowed is 500 and discount received is 100. now we'll do the total of cash. कैश में कितना दिख रहा, 9350 प्लस 2800 प्लस 5800 प्लस 3700 इज इक्वल्स टू 21650. अब ये टोटल ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्रेडिट साइड से कंपेयर करें तो जो टोटल ज़्यादा रहता है वो हम दोनों तरफ लिखते हैं, दैट इज़ 21650. अब now what we have to do, from this 21650 we need to subtract the amounts of credit, that is 4200 minus 150 minus 5800. the answer is 11500. 11500 is the answer of cash. now let us do the total of bank. बैंक में कितना दिख रहा है, 10,000 प्लस 6,000 प्लस 4,200 प्लस 5,800, दैट इज 26,000. तो ये ऑब्वियसली ये ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है वो हम दोनों तरफ लिखते हैं, लिख डालें 26,000 ऑन बोथ साइड्स, एंड फ्रॉम दिस 26,000 वी हैव टू सबट्रैक्ट दिस टू अमाउंट्स, minus 600 minus 1,900. so the amount is, the balance is 23,500. अब इसकी डेट क्या रहेंगी, लास्ट डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन डेट, तो आखिरी ट्रांजैक्शन की डेट क्या है, 27/2/2019. सो हियर वी हैव टू राइट बाय बैलेंस कैरी डाउन. सो बैलेंस कैरी डाउन करे बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है. सो इट विल जंप एंड मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड. ठीक है, व्हाट विल बी द डेट, अगले महीने की पहली तारीख रहती डेट, ठीक है, द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ. सो द डेट विल बी 1st March 2019. here we have to write to balance carry down, to balance brought down. done. So now we need to write the balance, 11,500
500 is the balance of cash and 23,500 is the balance of bank. Done. From this we have completed problem number 13, and in the next video we'll cover problem number 14. Thank you, and stay connected with Ranks, the Institute of Commerce.